Hello learners, I welcome you all to this English class on behalf of my YouTube channel. I welcome all plus 2 second year students of Arts, Science and Commerce of Odisha, those who are reading under chse pattern. In previous class we have discussed about the poem Daffodils written by William Wordsworth. In this poem we have discussed that once the poet happened to visit a place where he saw thousands of daffodils. They were fluttering and dancing in the breeze. It was an attractive sight for the poet, and he gazed the daffodils for a long time. And when he was lying in his couch in pensive mood or in free mood, he always remembered the daffodils, and his mind was dancing with the daffodils. So come, today let's discuss the summary and the questions that present at the end of the poem. We will answer them. So come, let's discuss them on our mobile screen. It would be convenient for us to write them making a pause. Yes, those who haven't subscribed our channel, they can subscribe for language classes, English and Odia. Yes, come, let's discuss it on screen. Now students, we will discuss about the summary of the poem Daffodils. The poem Daffodils, written by William Wordsworth, is a poem of emotion. Once the poet was wandering alone like a floating cloud and happened to visit a lakeside. At once he saw a crowd of golden daffodils which were dancing in the breeze. He found them under the trees and they spread by the margin of a bay. According to the poet, there were 10,000 and they spread endlessly as the stars in a milky way. They were fluttering and tossing their heads in the breeze as if they surpassed the waves of the bay. That was a grand sight which was inexpressible. The poet got impressed by that sight. He gazed and gazed speechlessly and could think nothing. Only he thought that these flowers were the wealth for him and would bring him the utmost pleasure. After that, when the poet often sat lying in his couch in vacant or in thoughtful mood, the daffodils would flash upon his inward eye and his mind danced with those golden daffodils. Now students, we will discuss the questions that present at the end of the poem. Question number 1. When did the poet see the daffodils? अर्थात कवि केतेबेले से daffodil फूल गुड़िक देखिले. आंसर हम जेतेबेले कवि लक्ष्यहीन भाव में एक भसा मेघ भली घूरी बुलुथिले सेतेबेले से daffodil गुड़िक देखिले. Answer हम the poet saw the daffodils when he was wandering aimlessly alone like a floating cloud. Next question. Where did the poet see the daffodils? कवि केउठी daffodil फूल गुड़िक देखिले. आंसर हम कवि गछ तले एवं एक ह्रदर पार्श्व से daffodil फूल गुड़िक देखिथिले. The poet saw the daffodils under the trees beside the lake. Next question. Fill in the blanks to describe the idea of stanza 1. The poet was gap in the English countryside. He saw thousands of gap fluttering and dancing beneath gap and beside gap. The daffodils appeared to be gap in the strong breeze. Stanza 1 रो आमे सुनिश्चन पूरण करिबा. The poet was परे आमे गोटे verb रो ing form लिखिबा जाके हम लिखिबा wandering. The poet was wandering in the English countryside. He saw thousands of gap रे हम लिख परिबा daffodils fluttering and dancing beneath the trees and beside the lake. The daffodils appeared to be परे आमे गोटे verb रो ing form लिखिबा जाके लिखिबा dancing. Daffodils appeared to be dancing in the strong breeze. Next question. What does the poet compare the daffodils with? कवि daffodils को कहाँ सह तुलना करती? कवि daffodil फूल गुड़ी को छाया पथर थिबा तारका मान सहित तुलना करती. Answer हम the poet compares the daffodils with the stars in the Milky Way. Next question. What resemblance does he find between the stars and the daffodils? कवि daffodil फूल एवं तारका मान मध्य कौन समानता देखती? कवि daffodil फूल एवं तारका मान मध्य यही समानता देखती जे तारका मान भली यही फूल मान मध्य संख्याहीन. आम आंसर लिखा. The resemblance he finds between the stars and the daffodils is one of countless. Number 6. What does the poet say about the number of flowers? कवि फूल मान संख्या विषय कौन कहती? कवि से फूल मान संख्या विषय कहती जे से फूल मान संख्या 10,000.
आम आंसर लिखा दि पोएट सेज अबाउट द नंबर ऑफ फ्लावर्स इज 10,000. नंबर 7 वेयर वेर दि फ्लावर्स फूलगुड़िक केउंटी थिले फूलगुड़िक एक हरद पार्श्वर एवं गछ मूले थिले आम आंसर कहिपरिबा दि फ्लावर्स वेर बिसाइड दि लेक एंड बीनीथ द ट्रीज. क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच ऑफ द टू डांस्ड मोर स्प्राइटली दि वेव्स और द डैफोडिल्स. अर्थात डैफोडिल फूलगुड़िक ना से उपसागर ढेउगुड़िक अधिक जीवंत भाव नृत्य करुथिले. उत्तर हेबो डैफोडिल फूलगुड़िक. ताहले आम लिखिपरिबा दि डैफोडिल्स डांस्ड मोर स्प्राइटली. नंबर 9 हाउ डज द पोएट फील व्हाइल लुकिंग एट द डैफोडिल्स. अर्थात डैफोडिल फूलगुड़ी देखि कवि कौन अनुभव करती. उत्तर हेबो डैफोडिल फूलगुड़ी देखि कवि अत्यंत आनंद विभोर हो जाती जहाँकि प्रकाश करिहेब नाही. आम लिखिपरिबा व्हाइल लुकिंग एट द डैफोडिल्स द पोएट फील्स utmost pleasure which is inexpressible. Number 10 what happens to the poet when he lies on his couch. जेतेबेले कवि तांको सोफा उपरे पड़ी रहंती सेतेबेले कौन घटे. उत्तर हबो जेतेबेले कवि तांको सोफा उपरे पड़ी रहंती सेतेबेले सेही नाच करुथुवा डैफोडिल फूलगुड़िक तांका आखि आगरे भासी उठंती. आम आंसर लिखिबा when the poet lies on his couch he feels that the dancing daffodils flash upon his inward eye. नंबर 11 मेंशन द टू मूड्स ऑफ द पोएट. कविंकर दुईट मूड दर्शा. आम कहीपर गोटे है भैकेंट मूड आउ गोटे है पेनसिव मूड. आम आंसर लिखा द टू मूड्स ऑफ द पोएट आर पेनसिव मूड एंड भैकेंट मूड. नंबर 12 व्हाट डज द पोएट फील व्हेन ही रिमेम्बर्स द साइट ऑफ द डैफोडिल्स. जेतेबेले कविंक से डैफोडिल फूलगुड़िक कथा मन पड़े से कौन अनुभव करती. आम उत्तर लिखा मन आनंद भरी जाए और से डैफोडिल फूलों सहित नृत्य कर लगे. आम आंसर लिखा व्हेन द पोएट रिमेम्बर्स द साइट ऑफ द डैफोडिल्स हिज हार्ट फील्स विथ प्लेजर एंड डांसेस विथ द गोल्डन डैफोडिल्स. नंबर 13 वेयर डज द पोएट राइट द पोएम. कवि केउंठी लिखती कविताटी बिसाइड और ऑफ द लेक. लेक पार्श्वर ना लेक टू दूर रे. आम कहवा लेक टू दूर रे. आम कहवा द पोएट राइट्स द पोएम ऑफ द लेक. Number 14 do you find a rhyme scheme in the poem. The rhyming scheme of the first stanza is A B A B, A cloud and a crowd, B hills and daffodils, ending with a rhyming couplet C C, C trees and C breeze. Is the rhyme scheme similar in other three stanzas or do you find any variation. प्रश्न अर्थ है तुम्हें कविता माध्यम किसी राइमिंग स्कीम देखिपार कि. राइमिंग स्कीम प्रथम स्टांजा अच्छी ए बी एवं ए रे क्लाउड, बी क्राउड, हिल्स डैफोडिल्स, एंडिंग विथ ए राइम कपलेट सी सी. शेष में अच्छी सी सी अर्थात ट्रीज सहित ब्रिज. इज द राइम स्कीम सिमिलर. ये राइम स्कीमटा अन्य सब स्टांजा सिमिलर अच्छी ना किसी अलग अच्छी. ये राइमिंग स्कीमटा सब स्टांजा सामान अच्छी. आम कह द राइमिंग स्कीम इन अदर थ्री स्टांजास इज सिमिलर. नंबर 15 हाउ मेनी टाइम्स इज द वर्ड डांस रिपीटेड इन द पोएम. ए पोएम रे डांस वर्डटा केते थर आछि. आम जानिछे 4 थर आछि. In which line does it show the happiness and liveliness of the flowers. कौ स्टांजा रे फूल मानकर लाइवलीनेस अर्थात जीवंतता एवं हैप्पीनेस आनंद विषय वर्णना कराई. आम कहवा द वर्ड डांस इज रिपीटेड 4 times in this poem. The line tossing their heads in sprightly dance shows the happiness and liveliness of the flowers. Number 16 in which line does it create a sense of harmonious relationship between the daffodils and the waves. कवितार केउं धाड़ी डैफोडिल फूल एवं से उपसागर तरंग गुड़िक मध्य साम्यता वर्णना कर. आम आंसर कहवा द वेव्स बिसाइड देम डांस क्रिएट्स ए सेंस ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द डैफोडिल्स एंड द वेव्स. नंबर 17 इन व्हिच लाइन डज दिस हार्मोनियस रिलेशनशिप इनक्लूड द पोएट हिमसेल्फ. आम बुझा कवितार केउं धाड़ी यही विषय यही सामंजस्य कवि को मध्य संपृक्त करे. आम आंसर लिखा द लाइन इन सच ए जैकेंट कंपनी एस्टाब्लिशेस दिस हार्मोनियस रिलेशनशिप दैट इंक्लूड्स द पोएट हिमसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट फिगर्स ऑफ स्पीच डू यू फाइंड इन द पोएम. यही कवितार तुम क्यों आलंकारिक प्रयोग देखा पाउछ. यही कवितार आम रूपक एवं उपमा अलंकार देखा पाउछ. आम लिखा आंसर वी फाइंड मेटाफर एंड सिमिली इन द पोएम. क्वेश्चन नंबर 19 simile is a figure of speech that makes an explicit comparison between two unlike things by using like, as, etc. For example, in I wandered lonely as a cloud, as the loneliness of the poet resembles the loneliness of the cloud that is floating high in the sky, the figure of speech used in a simile. What other example of a simile do you find in the poem?
अर्थात आम बुझा सिमिली कहले उपमा अलंकार अर्थात दुईटी प्राकृतिक अप्राकृतिक वस्तु भितर यह सामंजस्य आनिदिए जमीक एज लाइक भली शब्द जोग हुए जमी उदाहरण स्वरूप आई वांडेड लोनली एज ए क्लाउड मु गोटे मेघ भली भासी बुलूली एज द लोनलीनेस ऑफ द पोएट रिजेम्बल्स जमी कवि एकांतता सामंजस्य हुए द लोनलीनेस ऑफ द क्लाउड मेघ सहित दैट इज फ्लोटिंग हाई इन द स्काई जहाँकि आकाश में भासे दि फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन सिमिली एटी हूँ गोटे उपमा अलंकार यहीपरि अन्य कौन अलंकार ये कवितार प्रयोग होती कि आम कह हाँ एमती अलंकार ये भितर प्रयोग होती जहाँकि हूँ उपमा अलंकार और रूपक अलंकार आम कह दि अदर एग्जांपल ऑफ ए सिमिली वी फाइंड इन द पोएम इज कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन. Question number 20. Metaphor is a figure of speech that makes an implicit comparison between two unlike things. In what wealth the soul to me had brought, the poet imagines the happiness brought to him by the beautiful scene of the flowers as wealth. Does he use a metaphor here? Metaphor is a figure of speech. Metaphor कहले रूपक जहाँकि गोटे अलंकार that makes an implicit comparison जहाँकि एक तुलना आनी दिए between two unlike things. दुईटी सामंजस्य नथिबा वस्तु भितर आम कहीपर ये इन व्हाट वेल्थ दि शो टू मी हैड ब्रॉट दि पोएट इमाजिन्स द हैप्पीनेस ये कवि आनंद प्रकाश पाँच ब्रॉट टू हिम बाय द ब्यूटीफुल सीन ऑफ द फ्लावर्स जमीक एज वेल्थ संपद सहित अर्थात फूलर सौंदर्य को से संपद सहित तुलना करते रूपक अलंकार प्रयोग कर आम कह हाँ से रूपक अलंकार प्रयोग करम कह येस ही यूजेस ए मेटाफर हियर. Question number 21. 10,000 saw I at a glance. Is it an exaggeration? Will you call it a hyperbole? आम प्रश्न बुझा 10,000 saw I at a glance. कवि कहते मुझे एका बेले 10,000 देखली यह एक अतिशयोक्ति कि एक्जाग्रेशन अर्थ अतिशयोक्ति आम कह हाँ यह एक अतिशयोक्ति आम कह येस इट इज एन एक्जाग्रेशन वी कॉल इट ए hyperbole. Question number 22. What figure of speech does the poet use in the stretched in never ending line? अर्थात the stretched in never ending line धाड़ी रे कवि क्यों अलंकार प्रयोग करछंती हम कहबा एठी कवि अतिशयोक्ति प्रयोग करछंती हम कहबा the poet uses hyperbole in the stretched in never ending line. Then students, so far we have discussed the summary and questions and answers of the poem Daffodils. So thank you for watching this video class. Bye bye.